लाइव हो गया होगा। नहीं आएगा सर, आप इस तरफ पूरा देख रहा था ना। लाइव क्लास है, ठीक है।
Okay, so sorry for being late today. Uh, I left class, previous class, very late, and then someone was waiting to meet me in the office. So, उसमें भी time लग गया. So when you get late, it has a you know, cascading effect upon your schedule. फिर और आप ज़्यादा और लेट होते जाते हो, है ना? तो लेट नहीं होना चाहिए. सीख यही है. तो हम लोग क्या कर रहे थे कल? We dealt with Davis and Pink's model. Yes. So, are these two models comfortable to all of you? Comfortable? Okay. So, can you deal with that comparative study of Davis and Pink? Hmm? Matlab, the the I would say the similarities and differences you see between Davis and Davis and Pink. ठीक है? That is very easy. मैंने कल भी आपको बहुत सारे points बताया कैसे मतलब how Davis is different from the Pink's model और how Pink's model is different from the Davis model. ठीक है? तो दोनों का similarities and the differences you have to keep in mind. You never know if you find a comparative if you are demanded to compare these two models, then you should be able to do that. उसको आपको ध्यान रखना है. ठीक है? लास्ट पेज में देखो एक बार जरा सा मैंने जो मटेरियल है उसका जो एडिशनल जो नोट दिया हुआ है उसमें देखेंगे जो मैंने दो हेडिंग में आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताए हुए हैं. ठीक है? तो जस्ट सी द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, है ना? तो अंडर द सिमिलैरिटीज यू विल फाइंड, देखो वहां पे सिमिलैरिटीज में क्या क्या पॉइंट्स हैं. देखो, हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हो. इनफैक्ट ये सारे मॉडल में लिख सकते हो. Isostacy and isostatic adjustment is a reality. We know this. This is a natural phenomenon, which is affecting all the landforms, right? Any landform on the surface of Earth, and none of these models, right? Whether it is your Davis, Penck, Elsie King, okay, Stoller, Allen Wood, किसी का बात करो, they have not, right? They have not taken into account the isostatic phenomena. ठीक है? तो this is one common point you can add for criticism, है ना? And then uh, एक बार वो similarities देखिए और differences देखिए. What are the similarities? देखो, do you find the similarities there? मिला? लास्ट पार्ट में मैंने एडिशनल नोट दिया था ना राधे, कल मैंने दिखाया था. उसमें है उसी में तो है. हाँ बस 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 बस. या ये हम्म, ठीक है. सिमिलैरिटीज में देखिए,
ठीक है, सारा पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, यस। So this is right. This is the comparative aspect of Davis and Penck model. Okay, merits and demerits. ठीक है. Now, when you talk about merits and demerits of Penck and Davis. ठीक है. So what all points you can bring in? Like if I have to talk about the merit of Davis model and merit of Penck's model. Okay, ठीक है. And then the demerit of Penck's model and demerit of Davis model. ठीक है, ये किस लिए करना है? ताकि आप सिमिलरिटी डिफरेंसेस तो है, यू कैन सी दैट ना. Finally when you compare these two model, you can give a conclusion आप दे सकते हो. ठीक है, many of those points we already know, right? I'm going to make it systematic. ठीक है, just systematic है ना. Merit and demerit or limitations. Davis, Penck. Davis, Penck. Like this. ठीक है ना. तो what merit we have of Davissian model? Write the first point quickly. Just दो दो तीन तीन पॉइंट लिख लेना है. ठीक है. The merit of Davissian model. Merit of Davissian model. Merit में लिखिए first point. It is simple and easy to understand. It is simple and easy to understand. Simple and easy to understand. Point number two. Point number two. Presents a predictive and sequential approach. Presents a predictive and sequential approach for landform development. For landform development. Third point, has wider acceptance. Has wider acceptance. Penck's model. Number one, it is a complex yet an effective model. Complex yet an effective model, correctly establishing the relationship between endogenetic and exogenetic processes. Correctly establishing the relationship between endogenetic and exogenetic processes. Point number two, any landform and its relief, any landform and its relief
is is any landform and its relief is product of the difference in the intensity of application of endogenetic and exogenetic processes. Endogenetic and exogenetic processes. Full stop. This is what Penck has suggested. This is what Penck has suggested. Now let us go to the demerit side. Davis. Davis. Considered endogenetic and exogenetic processes to be separate. Considered endogenetic and exogenetic processes to be separate. That is erroneous. That is wrong. Number two, the model of landform development, the model of landform development is overgeneralized presentation of landform evolution, overgeneralized presentation of landform evolution in a sequential manner, in a sequential manner. Full stop. Landform not always not always follow a sequential process of evolution because of because of the dynamic nature of the surface, because of the dynamic nature of the surface. In bracket you write tectonic process, tectonic movement. ठीक है? Then you write uh, under Penck demerit, just two points. Penck, he he did not give he did not give any weightage to any weightage to the geological structure in the evolution of landforms, any weightage to the geological structure in the evolution of landform. ठीक है? Last point you write use of German terms in the model, use of German terms in the model makes it complex, and difficult to understand.
So these are some of the points you have to keep in mind when you deal with Penks and Davis. मैंने आपको पहले बता दिया कि नोट्स में और पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है. तो वी नो द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज और यू कैन से द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू मॉडल. So when you are asked about the comparative study of Davis and Penk, what you have to do? You have to just talk about the similarities and differences. That's it. Over. Right? And then you have a short conclusion. Fine. Now just imagine a question where you have a question saying discuss geographical cycle of erosion of Davis, right? Or discuss Davison cycle of erosion with with क्या with merits and demerits, right? है ना? With merits and demerits. तो आपको क्या करना है? अब समझ में आ गया? वहीं पे डेविस को हटा के क्या होगा? पेंक. Discuss model of landform development as proposed by Penk and also talk about its merit and demerits. आपको ये बताना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं जो देखो पॉइंट सारे वही हैं, वहीं से मैंने उसको बस रिफाइन किया हुआ है. ठीक है, राइट? तो मतलब शुड नॉट बी कॉट अनअवेयर कि हम लिमिटेशंस में क्या लिखें, डिमेरिट्स में क्या लिखें, मेरिट्स में क्या लिखें. तो जस्ट टू पॉइंट्स ना. ठीक है, रेस्ट यू कैन चेक एंड आई मीन यू नो द एंटायर मॉडल, हम लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ है, तो उसको आप आराम से कर सकते हैं. तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन वी हैड for for the Davis and Penk model. Now we are moving to the next model, that is your LC King model. This is the last model we are going to deal with. ठीक है, कुछ पूछना था? वो तो डिफरेंसेस में डाल सकते हो आप. देखो आप ऐसा समझो, यू हैव पहला बात तो ये समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड डिमेरिट. देखो अगर इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड हर, तो आई एम मेकिंग ए कंपैरिजन. तो क्या बताना है दोनों में डिफरेंस क्या है. बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर डिमेरिट, व्हाट इज योर लिमिटेशन, तो व्हेन वी टॉक अबाउट लिमिटेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट मेरिट एंड डिमेरिट, दैट इज क्या, दैट हैज टू डू विद द इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. मतलब एनी पार्टिकुलर थ्योरी यू हैव टू टॉक अबाउट डेविस, यू हैव टू टॉक अबाउट पेंक ना, उनका मेरिट डिमेरिट क्या है. डिफरेंसेस मतलब यू हैव टू कंपेयर. ठीक है, तो उसमें आप जैसे बोलेंगे ना कि एक ने डेविस ने कहा ऑब्जर्वेशन किया, ही ऑब्जर्व्ड landform evolution in the humid area of the temperate region. ठीक है, but Penck made that observation where in the semi-arid and arid region. ठीक है, तो this is the difference because these two studies have evolved into different regions of observation. One is humid, the other is semi-arid and arid. हाँ ठीक है, ये तो एक कॉमन डिमेरिट है दोनों मॉडल का. A common demerit for both the model because what they have tried to do, and this is what LC King is doing. This is what Davis has done. Davis बोलते हैं कि this geographical cycle of erosion which he has observed where in the temperate region is the normal cycle. जो मैंने बताया कल, normal cycle का मतलब ये होता है कि the scholar, the geomorphologist, the person is suggesting that this should be the normal cycle for landform evolution across the world. ठीक है ना. पेंक वही बोल रहा है कि हमने जो ऑब्जर्वेशन किया दिस इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट दैट इज नॉट करेक्ट ना. तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ऑल दीज मॉडल्स, ए कॉमन लिमिटेशन. ठीक है, एलसी किंग मॉडल ऑफ लैंडस्केप और लैंडफॉर्म डेवलपमेंट. Although we use these two terms interchangeably, but you know the difference. Okay, right? Okay. Now this model was given by L.C. King in the year 1948. He gave this model. Okay. In the year 1948, he gave this model. Clear? ठीक है. Now L.C. King, right? L.C. King
Uh, he was a geomorphologist. He was a researcher, right? And he he took inspiration. He took inspiration from three models. Okay, three models. What are they? The model given by Davis, Penck, and Alan Wood. So his model is inspired by, or he takes inspiration from these three models. Okay, Alan Wood model is a very I would say is a very what to say is a very simple, simple model where he has not given any weightage to the to the tectonic or endogenetic forces. He has just talked about the exogenetic process, right? We'll discuss that later on. The first thing which we have to keep in mind here, that what he borrowed from Davis concept, right? What he borrowed from Penck's concept, which we have already discussed, and Alan Wood. Alan Wood, okay? तो फ्रॉम डेविस व्हाट ही ब्रॉट, क्या उन्होंने डेविस के मॉडल से लिया, ठीक है? So the first thing which he took from Davis model was cycle of erosion, which is predictive and sequential, which is predictive and sequential. His model is also predictive and sequential. Second, second stages of landform evolution, that is youth, mature, and the old stage. He accepted it. Okay, he followed that. But difference क्या है? Landform evolution, right? Landform evolution for Davis, and for LC King, both are different. One is talking about the end product, that is penny plane, and the other one is talking about one end product, that is pedi plane. But process remains same. That means the stages remain same as given by Davis. ठीक है? डेविस का एंड प्रोडक्ट क्या था? पेनी प्लेन. एलसी किंग का एंड प्रोडक्ट क्या है? पेडी प्लेन, राइट? द प्रोसेस इज पेडी प्लानेशन, एंड दैट पेडी प्लानेशन गोज, राइट, पेडी प्लानेशन गोज थ्रू थ्री स्टेज: यूथ, मैच्योर एंड द ओल्ड स्टेज. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और डेविस क्या कह रहे हैं? डेविस बोल रहे हैं कि द लैंडफॉर्म अंडरगोज थ्री स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन: youth, mature, and old, and finally evolves into a low lying, low lying feature, a low lying landform, that is your penny plane. ठीक है? Then accepted accepted the concept of normal cycle, accepted the concept of normal cycle, but according to LC King, semi arid
an arid region represent the normal cycle, not temperate region as proposed by Davis. So the concept of normal cycle was given by Davis. Davis ने concept दिया, and he said that this normal cycle, right, which was also called a geographical cycle of erosion, this normal cycle has has universal application. Okay, right? The same happens uniformly throughout the world. हर जगह पे ऐसा ही होता है, ठीक है ना? Landform, right? Landform develops uniformly in all, in all parts of the world under, under different climatic condition, right? वो कैसे evolve करेंगे? Uniformly, right? That is what, right? That is what Davis said, and that is what, what uh, Elsie King has said. The only difference is that Davis says that, that the normal cycle, the fluvial cycle which is operating in the temperate region is the normal cycle for the whole world, right? Okay. But Elsie King says no. The fluvial cycle which is operating in semi-arid and arid region and the savanna region where he made that observation, that should be regarded as the new normal. उन्होंने क्या बोला? New normal cycle for the whole world. Actually, the landform undergoes evolution as per, as per the process, as per the stages suggested by Elsie King, not as, as perceived or as suggested by डेविस. ठीक है, उनका ये कहना था कि नॉर्मल साइकिल वो वाला नहीं है जो टेम्परेट रीजन में डेविस ने ऑब्जर्व किया. नॉर्मल साइकिल एक्चुअली ये है, और दुनिया भर में ऐसा ही लैंडफॉर्म इसी तरह से क्या होता है, उनका इवोल्यूशन होता है. तो द न्यू नॉर्मल साइकिल शुड बी कंसिडर्ड एज दिस साइकिल ना, नॉट मतलब एलसी किंग साइकिल, नॉट द नॉर्मल साइकिल एज प्रपोज्ड बाय डेविस. तो दोनों में डिफरेंस है. फॉर एलसी किंग द साइकिल ऑपरेट्स वेयर इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन and the savanna region of Africa. Yes, whereas Davis has made this observation where in the temperate region and in the Appalachian region of USA. Temperate region है in the Appalachian mountain region. Okay, and said that this cycle would be normally found everywhere in the world. ठीक है, cycle of what? The cyclic process of landform evolution. Yes, Elsie King says no. The cyclic process of landform evolution which is seen here in the semi-arid zone, that is actually the normal cycle. ठीक है, तो ये सारा कुछ इन्होंने एक्सेप्ट किया. देन हाँ, अब ये बात हो सकता है कि कौन सा सही है. तो आंसर इसी में है. As far as the evolution of landform in semi-arid and arid region concerned, you will find Elsie King model is more accurate. Right? When we see the landform evolution in the temperate region or the humid region of the world, we find Davis is more correct. ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि you see gorges, you see canyons ना, ठीक है, you see gorges here in this Himalayan belt. ठीक है, तो what shape they have steep V-shaped valleys ना. This is what Davis suggested ना. Yes, this is what Davis suggested. But when I go to central part of India, when I go to Nasik, when I go to Vidarbha region of Maharashtra, now what I find those landscape which are having scarp face, as proposed by Elsie King. मतलब ऐसा समझना है. देखिए डेविस क्या कह रहे हैं? This is your landform. Yes, this is your landform subjected to what? मालूम है? This is your landform subjected to downwesting. कल ही मैंने बताया था downwesting. This is how the slope develops. ठीक है? And progressively what happens? Progressively we have deepening of the valley here. Valley deepening takes place. ठीक है? हमको ऐसा मिलता है. Elsie King के मॉडल में हमको क्या दिखता है?
एलसी किंग कहते हैं कि दिस मॉडल वुड बी डेवलप्ड ओनली व्हेन यू हैव ए स्कार्प फेस, ठीक है, यू हैव ए स्कार्प फेस। कुछ इस तरह का, मतलब लैंड फॉर्म वुड लुक लाइक दिस। दिस इज द स्लोप, ठीक है। उनका कहना है कि एक स्कार्प लैंड होगा, ठीक है, मतलब ऊपर का जो टॉप है वो कुछ इस तरह का दिखेगा, ये जो मैंने बनाया है कुछ इस तरह का, ठीक है। दिस लैंडफॉर्म विल हैव this kind of slope. It has four parts. मतलब this would be the right. This would be the uh, convex slope. This would be the free fall. This would be your uniform slope, and right. And then we have this one, which is right, which is uh, made up of gentle slope. ठीक है। तो आप सेंट्रल इंडिया में जाएंगे तो कैसा दिखेगा? कुछ लैंडफॉर्म इस तरह का दिखेंगे आपको, ठीक है, वेयर द लैंडफॉर्म, द टॉप पार्ट ऑफ द लैंडफॉर्म स्टिल हैविंग दिस scar face. After periods of right erosion, they are still having this scar face. ना कभी पहाड़ को देखेंगे सेंट्रल इंडिया में तो you'll find these landforms like this, ठीक है। मतलब that means the landform which is having what? Which is having scar face, ना, which is having scar face मतलब free fall face, free fall, where the right where the sediment falls freely because the slope is very steep, ठीक है, slope is very steep, है ना, free fall, and that is the prerequisite for मान लो यहाँ free fall होगा तो sediment would be deposited here first, right, and just because the sediment is falling freely, so ultimately that would be pushed and finally the sediments get deposited where? In this, right, in this lower segment of the slope, right, okay। तो ये है हमारा जो एलसी किंग का मॉडल है, वो ये कहते हैं कि भाई जो स्लोप है ना उसका चार पार्ट है, कॉन्वेक्स, फ्री फेस, ना कॉन्वेक्स फ्री फेस दो हो गया, दिस योर यूनिफॉर्म स्लोप, कांस्टेंट स्लोप, एंड दिस इज योर लोअर राइट लोअर सेगमेंट ऑफ द स्लोप, और यू कैन से दिस योर राइट दिस योर कॉन्केव स्लोप, राइट, okay, then he says that the slope declines, right, slope declines the slope declines parallelly, there is a retreat of the slope, not right, not I said not only you have backwasting, not only you have slope replacement from below, you have slope replacement going on parallelly। कल ही मैंने बताया था where the length of the slope, that means length of this slope, right, and this slope does not change, matlab after some time what will happen, the landform is like this, length of the slope remains same, the length is the same, angle is same, after some time what happens, this is the slope now, here the angle, you see the angle, after some time what happens, again you have new landform, matlab erosion has taken place, but length of these two slope, that means the upper and middle slope will not change, their angle will not change, but yes, the length of the lower segment of the slope obviously would be different, that would be different with changing uh, with changing evolution of the landform, मतलब with further progress in the erosion of the landform, ठीक है। तो दोनों में हमको ये बात हम लोग को याद रखना है कि जैसे जैसे मैंने इसके बारे में बोला था, तो हम क्या देखते हैं, हम डीप वैलीज हम पाते हैं, ठीक है, और ये कहां पे मिलता है, दिस इज इन द ह्यूमिड रीजन, yes, this particular landform we see where in the arid and semi arid region, if you happen to get a chance to, I mean जरूरी नहीं है जाने का, like just see the right, just google करो ना, youtube में डालो and you'll find the mountains there in the विदर्भा region, नासिक के आसपास का जितना भी
आई हैव बीन टू दोज प्लेसेस, तो मैंने देखा हुआ है, ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो यू विल फाइंड कि जितना भी माउंटेन है ना, दे आर हैविंग ए टॉप, राइट, दे आर हैविंग टॉप लाइक ए बेल, ना, एक बेल के जैसा, ठीक है, which is nothing but the scar face, okay, nothing but the scar face, and they are separated by wide, right, wide flat valleys, okay, and those flat wide valleys are your paddy plain, as right, as proposed by LCK. But where I find this landform, I find this landform in the semi-arid region of semi-arid region of the country. Do we find this kind of landform here? यहाँ पे कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है, वाई, बिकॉज दिस इज ए ह्यूमिड, राइट, ह्यूमिड रीजन, ठीक है, जहां बारिश ज्यादा होता है, ठीक है। तो दोनों में बस ये बेसिक याद रखना है कि कहाँ मिलेगा, वो लोग ने खुद बताया है, जब उनका ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्वियसली ऐसे तो उन्होंने नहीं बताया। नाउ next point, did not provide any weightage to climate just like Davis, just like Davis। क्यों? अब सोच के देखना है, फिर इसका सवाल का जवाब समझिए। डेविस का जैसा ये भी बोल रहा है क्लाइमेट का कोई रोल नहीं है ना, वो इसलिए बिकॉज दे थिंक दैट द ऑब्जर्वेशन विच दे हैव मेड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एनी क्लाइमेटिक कंडीशन that has universal application that can be applied anywhere in the world, and we know that at different places we have different climatic condition, which means that they have not taken into account the climate factor for the evolution of landform. And practically we all know that climate plays a very important role in landform evolution. The process of wear and tear, the process of denudation is mainly driven by the climatic, right, the climatic factors, yes, ठीक है। तो ये दोनों मॉडल में ये बीमारी है, ठीक है। वो बोलते हैं कि भैया नहीं, हमने जो बोल दिया नॉर्मल साइकिल वही है, दुनिया में वही काम करेगा, ठीक है, डेविस ने भी वही काम किया था। तो दे हैव नॉट गिवन एनी वेटेज टू बोथ डेविस और डेविस और एलसी किंग दोनों, ठीक है। देन कमिंग टू पेंग, पेंग से उन्होंने क्या क्या लिया, राइट, ही टू गेव importance to endogenetic processes and and accepted simultaneous operation of endogenetic and exogenetic endogenetic and exogenetic processes. He modified the slope replacement model of he modified the slope replacement model of Penck to parallel retreat model of slope development.
तो पेंक का मैंने बताया क्या क्या उन्होंने पेंक से लिया है, ठीक है, एंड देन what inspiration he got from, or what inspiration he uh, right, uh, took from Alan Wood. So that is your scarf face, है ना? Scarf face, which is also called as free fall face, है ना? Okay. Now one point you have to keep in mind here, which we have just seen in the diagram, जो अभी हम लोगों ने देखा, है ना? तो क्या इसमें याद रखने वाला बात है कि जो स्कार्फ फेस है एलन वुड का, जो उन्होंने सजेस्ट किया वाइल ही गिव दिस हिल साइड स्लोप, right, slope, or the element of hillside slope in one study conducted in the year 1942, and right, and Elsie King just accepted that. Okay, nah? And this scarf face is the most important constituent of landform development in LC King model. If there would be no scarf face, LC King model cannot operate. ठीक है? आप समझ रहे हो ना जो मैंने क्या बोला ये? For LC King, there are four, right? There are क्या? There are four slopes. There are four kinds of slopes. Okay? There are four kinds of slope. मतलब कुछ इस तरह से हो सकता है, okay? This is your landform. ठीक है? Now I am showing you this side of the slope. तो ये जो है वो क्या है? This is your scarf face. हाँ? This is your convex top. क्या है? Convex top. कैसा है? अरे ये जो ऊपर का देख रहे हो कैसा है? कुछ इस तरह का. Convex top. Okay? This part is what? This is your scarp face or free fall slope. ठीक है? तो yes or no? ठीक है? Then the third one is your uniform or constant slope, and finally this one is your concave slope. तो for LC King there are four types of slope. फिर से आप लोग को याद दिलाऊं थोड़ा सा स्लोप का भी डिफरेंस, मतलब जस्ट वी हैव टू सी द टॉपिक. तो याद रखना है कि फॉर डेविस देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लोप, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. फॉर पेंक देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्लोप. व्हाट आर दो थ्री टाइप्स? कॉन्वेक्स, यूनिफॉर्म एंड कॉन्केव, राइट? फॉर एलसी किंग देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्लोप. ठीक है? कॉन्वेक्स, देन फ्री फॉल दैट इज योर स्कार्प फेस, then you have rectilinear that is uniform, and finally you have concave slope. तो ये चार स्लोप है किसका? फॉर एलसी किंग. ठीक है? बस उसमें ये ध्यान रखना है जो ठीक है? This is your this is what the scarf face means. Scarf face क्यों जरूरी है इनके मॉडल में?
अगर स्कार फेस नहीं होगा तो देयर कैन नॉट बी पैरेलल रिट्रीट ऑफ द स्लोप, राइट? ओके, if there is no scar face, there cannot be parallel retreat of the slope, not in the upper part of the slope, not in the middle part of the slope. Parallel retreat is possible because there is sudden fall of the eroded material. The slope is क्या? The slope is almost perpendicular, almost, right? Almost it is, right? See, it is having a very steep slope, right? And because of this, the eroded material falls suddenly. There is no accumulation of eroded material where on the face. Okay, that material is pushed where to the, right, to the middle part of the slope. That is your constant slope. Okay, and right, and continuously, right, continuously the material would be, right, would be pushed downward, and that will start accumulating over the lowest segment of the slope. That is your lower segment of the slope. Okay, this is what, right, this is what, right, this is what eventually evolve, or this is what eventually converts into or transforms into a pedi plane. Okay, that is your pedi plane of, right, of LC king. Okay, so this is your observation by, right, by I said by LC king. Now comes the, right, the main part. LC king का जो main part है, his model of landform development has two major, right, two major part or two major processes. What are the two major processes? One is the process of scarp retreat. ठीक है? The process of scarp retreat, and the second is the process of pediplanation. क्या बोलते हैं? Pediplanation. Scarp retreat takes place because of the parallel retreat concept, right? Parallel retreat concept given by LC King. Parallel retreat. That means the slope in the upper and the middle part will slope, right? Will be replaced, right? That would be replaced. Okay. That means the slope, right? Slope in the upper and the middle part would be replaced by, right, by the gentler slope from below. Okay, just like पेंक के जैसा थे. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ना, क्या उन्होंने कही, मॉडिफाइड स्लोप रिप्लेसमेंट, right, slope replacement model of पेंक, and instead of calling it slope replacement, right, he made it parallel retreat. ठीक है ना? बस ये मेन डिफरेंस. इतना दोनों सिमिलर है कि सबको बहुत टाइम तक यही लगा कि पेंक, असल में पेंक का भी मॉडल पैरेलल रिट्रीट का है, बट हिज मॉडल वाज नॉट एग्जैक्टली ऑफ पैरेलल रिट्रीट. पैरेलल रिट्रीट मॉडल हैज बीन गिवन बाय एलसी किंग. ठीक है ना? पर पेंक का क्या कॉन्सेप्ट था? पेंक का कॉन्सेप्ट था क्या? बैकवास्टिंग. यस और नो? ही सेज दैट द जेंटलर स्लोप बिलो will replace the steeper slope above, right? Yes, and that replacement goes how? From bottom to top, नीचे से. ठीक है, पर डेविस क्या बोलते हैं? From top to bottom, right? The steeper slope from above will give way to the gentler slope below, right? Downwasting. उन्होंने बोला downwasting. That is the concept of slope decline by Davis and slope replacement concept by Penck. He gave the concept of parallel retreat of slope. ठीक है, parallel retreat of slope, where he says that the slope, right, the slope, that means the scarp slope and the middle slope, right? Scarp and the middle slope, these two slope will retreat parallelly, where the length as well as the angle of the slope will not change, right? मतलब कि after erosion कैसा होगा? देखिए, after erosion what will happen? मान लो this is the upper part ना, ये हमारा upper part है. ओके, हम लोग ये इसको नहीं समझना है, इसको समझना है अभी. दिस इज द अपर पार्ट एंड दिस इज योर मिडिल पार्ट, है ना? तो व्हाट ही सेज, द स्लोप, राइट, मालूम है ना पेंक क्या कर रहे हैं? बैकवेस्टिंग. जेंटलर स्लोप फ्रॉम बिलो विल रिप्लेस द स्टीपर स्लोप अबव. यही बोल रहे हैं ना? हाँ, बात तो समझ में आता है कि टॉप माउंटेन जो इरोड होगी वो जेंटल स्लोप में आ जाता है. जब ऑलरेडी स्लोप नहीं है तो हाउ कैन इट गिव राइज टू दैट if there is no slope. जैसे कि आप बता रहे बैंक जो बोल रहे हैं कि उसका स्लोप जो रिट्रीट करता है साइड हायर वाला इंडिकेशन. सर मेरा समझ में प्लेन वाला कैसे, मतलब अपलैंड में वो स्लोप कैसे? ऐसा है कि
हम लोग को हमेशा याद रखना है इस बात का कि जितने भी ये मॉडल्स हैं, these all models are emphasizing what? They're emphasizing exogenetic processes, denudation processes. Now let us, I mean, you have a very right, you know, क्वेश्चन गलत क्वेश्चन नहीं, आपका बिल्कुल सही है, आपका इमेजिनेशन भी ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है थोड़ा देखना है। जितने भी ये मॉडल है सारे क्या है? these all models are क्या है? these all models are predictive model and they are giving weightage to what? Denudational process, not the endogenetic processes. ठीक है, अब सोचना है तो पर्पस क्या है? Denudational processes have a single objective and that is to क्या? That is to ensure that a high relief landform finally converts into a low relief landform, a very menial landform. Yes, ठीक है। Now what Penck is doing? Penck क्या कह रहा है? Penck बोल रहा है कि the gentler slope from below will replace the steeper slope above. This is your lower segment of the slope, this is your middle segment, and this is your upper segment. He has not talked about the scarf face. Scarf face का बात नहीं किया उन्होंने, ठीक है? ठीक है? The gentler slope from below will replace the steeper slope above. The steeper slope above, है ना? The gentler slope from below will replace the steeper slope above, like this. The steeper slope above, like this. ठीक है? समझ रहे हैं? कहने का मतलब क्या है कि over a period of time, what will happen to the landform? The landform was having what? This relief, right? This was the height. Now after some time the landform is here, right? Yes, and what would be the segment of the slope which is going to experience maximum expansion? अगर मान लो कोई लैंडफॉर्म बहुत हाई रिलीफ का है, उसको एकदम लो रिलीफ का बनना है, यही तो डेनुडेशनल प्रोसेसेस का ऑब्जेक्टिव है ना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ना। तो वो क्या होना है? ऑब्वियसली द लो रिलीफ लैंडफॉर्म, द लो रिलीफ स्लोप should will have the low relief landform or slope will have maximum coverage, it will have maximum extension. That means after some time what you'll find? You'll find that the landform has become more and more gentler, and from this angle after some time the landform has acquired this angle. देखिए, ठीक है? अब इस लैंडफॉर्म को देखिए, ये लैंडफॉर्म हमारा ऐसा है, दिस इज योर लैंडफॉर्म नाउ। पहले लैंडफॉर्म कैसा था? द लैंडफॉर्म वाज दिस ना। तो क्या हो रहा है धीरे धीरे? यू सी द लोअर पार्ट, द लोअर सेगमेंट व्हिच इज एक्सपांडिंग। व्हाई? बिकॉज दिस इज द कॉन्केव स्लोप, concave slope where you have weathering and erosion, all the weathered material are deposited where? Here, and ultimately that is leading to flattening of the surface. Now in the Penck's model what is happening? Penck has not talked about the parallel retreat, ठीक है? He's just talking about the slope replacement. That means the gentler slope from below will replace the steeper slope above, but the angle of the slope and length of the slope will not remain same. ठीक है? LC King says no, retreat will take place, right? But that would take place parallelly. Where? In the upper and the middle section. For Penck, it does not take place parallelly in any of the section of the slope, whether it is upper, middle or the lower section. देखो यहाँ पे जैसे इसको मैंने दिखाया था ना आपको, ये देखिए, ठीक है? दिस इज, मान लो ये हमारा ओरिजिनल लैंडफॉर्म है ना, दिस योर मिडिल स्लोप, दिस इज योर अपर स्लोप, ठीक है ना? तो Penck के लिए क्या है? देखो ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द मिडिल स्लोप, दिस इज द लेंथ ऑफ द अपर स्लोप, ठीक है? नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? द लेंथ ऑफ द अपर स्लोप इज डिक्रीजिंग। देखो angle is also not same, here it is 90 degree but here the angle has changed. Yes, ठीक है? Now you see here maybe the angle is 45 degree, maybe लगभग 45 degree, but here the angle has further changed, it
it has gone to 30 degree. Yes. तो लेंथ देखिए, इसका लेंथ एंड सी द लेंथ, ठीक है, सी इट्स लेंथ एंड दिस लेंथ ना. तो फॉर पेंक देर इज नो देर इज नो there is no fixed length, there is no fixed angle for for which one, for upper and the middle part, right? For penk, all three section of the slope will retreat but not with same length or angle, ठीक है. LC King says we'll have parallel retreat of the slope, and this parallel retreat is restricted to what? देखो, parallel retreat is restricted to the upper and the middle, क्या, middle, upper and the middle slope. Yes, where the angle of the slope will always remain same. The angle of the slope will always remain same. जितना भी उसका इरोजन होता जाए, कुछ भी होता जाए, the length as well as the angle of the upper and middle section will not change. Yes, but it would not be applicable in the case of the lower segment of the slope. The lower segment of the slope will have no fixed angle and it will have no equal length. ठीक है, अरे ये समझ रहे हो ना, ये है पैरेलल रिट्रीट का कॉन्सेप्ट असल में. ठीक है, जो जैसे मान लो हमने ये बनाया ना, ये ठीक है, ये है, दिस योर पैरेलल रिट्रीट ना. तो क्या बोल रहे हैं ये एलसी किंग, क्या बोल रहे हैं कि द लेंथ एंड एंगल ऑफ द स्लोप इन अपर एंड मिडिल पार्ट विल नॉट चेंज. ठीक है, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज, जब तक कि लैंडफॉर्म है. तो क्या होगा, ऑलवेज ना, लाइक दिस, सेम एंगल सेम लेंथ. ठीक है, ऑलवेज सेम एंगल सेम लेंथ. ठीक है, एक्सेप्ट द लोअर segment, or after some, maybe after thousands of years, what will happen, कैसा होगा, right? Maybe ना, this, मान लो this is your landform ना, after millions and millions of years, what will happen, tell me, what will happen? This landform will develop into a small क्या, elevation landform ना, and it will evolve into this. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो हो गया वो क्या हो गया, दैट इज योर लोएस्ट मोस्ट सेगमेंट ऑफ द स्लोप, एंड राइट, एंड दैट इज बिकमिंग क्या, दैट इज बिकमिंग पेडी प्लेन. व्हेन यू हैव मेनी ऑफ सच लोअर सेगमेंट स्लोप ऑफ डिफरेंट इंसेलबर्ग ना, ये सारे इंसेलबर्ग हैं. ठीक है, when they coalesce with each other, when they merge with each other, merge with each other, when they combine with each other, they lead to development of a larger क्या, a larger plane. We call this as, क्या बोलेंगे, we call this as पेडी प्लेन. ठीक है ना. जब शुरुआत में है, जब ये स्टिप स्लोप है, तो क्या बोलेंगे इसको, दिस इज पेडीमेंट. क्या बोलेंगे, पेडीमेंट. Many of the pediment will coalesce and they will develop into pedi plane, right? Pedi plane, okay, broken by few inselberg. हाँ, we'll have some inselberg, छोटे छोटे कुछ inselberg आपको मिलेंगे. ठीक है, तो दिस इज, am I clear now? अभी ये बात समझ में आया कि क्या पेंक, और मैंने स्लोप डेवलपमेंट भी पढ़ा दिया साथ साथ में. तो ये पेंक और एलसी किंग का जो डिफरेंस है बस इतना ही है. पेंक, हाँ, ये दोनों में बहुत सही है, दोनों तो इसका से अगेन देखो, दोनों में फिर एक जो सवाल है आपका वो भी ठीक है, लेकिन समझना है कि दोनों में एक बात समझिए कि none of these scholars are giving weightage to the geological structure, and we know that geological structure plays an important role in landform development. It is one of the pillar of geomorphological studies, huh? But these two scholars have not given any weightage to the geological structure. Now just imagine, this is the scar face
which is being represented by what? Which is being represented by a sedimentary rock. मान लो थोड़ी देर के लिए अगर कहीं कहीं देखते ना कि मिट्टी का भी पहाड़ है ना और उसका फेस कैसा है, स्कार फेस ना. तो टेल मी, आफ्टर सम टाइम, maybe after 5, 10 years, 15 years, you may find that the whole scar face of the sedimentary block has collapsed. Why? Why? Because rivers are flowing where? Rivers are flowing here. Nah? And the sedimentary rocks are porous in nature. Those rocks will come in contact with the groundwater. अरे क्योंकि अलग अलग लेवल है ना, मान लो ग्राउंड वाटर बहुत, it is very close to the surface. What will happen? It will start, it will start dissolving, it will start eroding those sedimentary material, and maybe after some time the whole structure will collapse. Possible है. That is called as basal sapping, है ना, where you have accumulation of weathered and eroded material in the lowest segment of the landform, right, and it leads to the collapse of the landform. ठीक है. तो अब सवाल का सीधा जवाब ये है कि if both the scholar assume that this scar face is made up of igneous material or hard crystalline material, then it would be possible for us to find such scar face for a long time. Yes, ठीक है. But that is not the case, my friend. ठीक है, that is not the case. I mean to say, I may find some scar face landform in North Indian plain also. In Kaimur range, you have many such, right? Because you have that hill which extends into Bihar. ना, Bihar is flat completely. ठीक है, it is already a paddy plain. है ना, मान लो हिल सिक्किम का. So you have some scar face there, but that is made up of what? Limestone. That is made up of what? Sedimentary material, right? And that is quite vulnerable to water. Na? So what we see today, that may not remain tomorrow. Okay? And in case of Deccan region, in the case of Central India, we find that these scar faces are made up of क्या? They are made up of hard crystalline rocks. Still they are visible. चारों तरफ दिखेगा. मतलब आप रोड से चलोगे, like you start from Mumbai and move towards Nasik. ठीक है ना. तो मैं रोड से जा रहा था तो मैंने देखा तो पढ़ने में तो अच्छा लगता है ना, लेकिन I went to that temple है ना, वहां पे one of the ज्योतिर्लिंग, you must be knowing that, क्या नाम है उसका, त्र्यंबकेश्वर ना, in Nasik. Okay, तो I was supposed to go there. तो वहां जाना था मुझे, तो with my family. तो बहुत पहले की बात है, I'm talking about 2007-8 ना. तो तब मैंने देखा वहां पे कि पहाड़ ऐसा ऐसा, और उस समय तो सिविल सर्विसेज का तैयारी, मतलब इट वाज ऑलरेडी इन द फाइनल स्टेज, मतलब आई वाज अबाउट टू कंप्लीट माय अटेम्प्ट्स ना, 2008 माय लास्ट अटेम्प्ट. देन आई ऑब्जर्व दिस ना, रोड से जैसे जाते हैं बहुत सारे आपको ऐसे पहाड़ मिलेंगे. ठीक है, बहुत सारे, और सबका स्कार फेस है ना, जस्ट लाइक ए बेल की जैसा दिखाई दे, ऊपर में बेल है. तो टॉप वाला पार्ट कॉन्वेक्स है, देन यू हैव फ्री फेस, देन यू हैव रेक्टिलिनियर, एंड देन बड़ा सा फ्लैट, बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज फ्लैट लाइन्स ना, ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन्स. ठीक है, क्लियर. तो ये कहना, फिर उसके लिए और भी सारा कुछ हमको देखना पड़ेगा. दैट मीन्स वी हैव टू कंसिडर द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर to find out which model would be more applicable, right? Which model would be more I would say more acceptable. I mean, LC King or Penck. ठीक है. तो LC King का मॉडल मैं बोलूंगा कि थोड़ा ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे, कि जो ऑब्जर्वेशन हमने किया तो क्या देखा, जो दिखाई दे रहा है कि सबका स्कार फेस का जो अल्टीमेट एल्टीट्यूड है ना, दैट इज सेम. For Penck model, Penck has never said that the height of the summit will always remain same. ठीक है? Yes or no? Remember his obstigende, glitch forming and abstigende, तीनों स्टेज में वो क्या बोल रहे हैं? याद है ना? Summit height is changing, है ना? But for LC King, the summit height does not change from the youth stage to the old stage. That remains same. And that is what I saw.
कि देखने से ऐसा लगा, आई डोंट नो, क्या आई एम नॉट ए फील्ड रिसर्चर, मैंने देखा तो मुझे लगा कि लगभग सबका बराबर ही दिख रहा है ना, क्योंकि आप चलते हुए गाड़ी से देख रहे हो ना, रुकने के लिए घर वालों को मैं बोलता कि मैं रुक के थोड़ा देखना चाहता हूँ क्या, तो लोग बोलते तुम्हारा दिमाग खराब है, इतना गर्मी था ना, तो मालूम है कि गाली सुनने वाला काम था, इसलिए मैंने देखा और खुद के अंदर अंदर मुस्कुराया, हंसा, ठीक है, अच्छा लगा देख के, और थैंक्स बोला नेचर को कि चलो मौका मिला मुझे, भगवान को भी बोला कि चलो देख लिया ना। तो इट इज नॉट, आई मीन, सो सिंपल टू आंसर दिस, स्टेट यस नो में तो आंसर नहीं दूंगा कि पेंक अच्छा है कि वो अच्छा, एलसी किंग ज्यादा अच्छा, पर दोनों का टाइमलाइन देखा जाए, देन सी द कंट्रीब्यूशन मेड बाय पेंक एंड एलसी किंग, ऑब्वियसली एलसी किंग इज बेटर प्लेस देन पेंक, ठीक है, बहुत लंबे समय तक काम किया उन्होंने। हाँ, स्लोप रिप्लेसमेंट में अपर पार्ट और मिडिल पार्ट में एजेंट्स का इफेक्टिवनेस ज्यादा रहेगा, उसके वजह से सेंटर बिल्कुल बिल्कुल, agents would be more furious, more effective in the, right, in the upper part, right, and then obviously with falling stiffness of the slope, their velocity will decrease, ना, ठीक है, तो एक काम करते हैं, सब कुछ तो हम लोगों ने बोल दिया आपको, तो यू टेक डाउन सम पॉइंट्स ऑफ एलसी किंग मॉडल। LC King model. LC King model. LC King model has two important. LC King model has two important processes. Put a dash and then write first the process of scarp retreat. The process of scarp retreat. Process of scarp retreat. Second, the process of pediplanation. Second, the process of pediplanation. Huh? प्लांटेशन नहीं, प्लानेशन, पेडी प्लानेशन, पेडी प्लेन है ना। Now then you write LC King model has following elements of slope change. LC King model has following elements of slope change. Of slope change. Put a dash and write slopes are replaced by parallel slopes from below. Parallel slopes from below. Next point. Parallel slope from below. Next point. The slope length and angle of the slope. The slope length and the angle of the slope in the
in the middle and in the upper and middle part, in the upper and middle section of the slope, in the upper and middle section of the slope will remain unchanged, will remain unchanged or same, will remain unchanged or same. Next point, lower segment of the slope, lower segment of the slope is not replaced by, is not replaced by parallel slope, parallel slope, full stop. The slope in the lower segment is replaced by a gentler slope from below, by a gentler slope from below, having unequal angle and length, having unequal angle and length, in bracket light, in bracket right, just like the slope replacement of Peng's model, just like the slope replacement model of slope replacement model of Peng, where the angle and length of the slope, where the angle and length of the slope is unequal in all three segments of the slope, in all three segments of the slope, that is upper, middle and lower segment, in all three segment of the slope, upper, middle and lower. Next you write, the process of pediplanation, the process of pediplanation. The process of pediplanation, the process of pediplanation occurs in a sequential manner through different stages, in sequential manner through different stages. They are as follows. Number one, youth stage. The cycle of pediplanation, the cycle of pediplanation starts with the upliftment of an earlier, start with upliftment of an earlier formed peδιplane
full stop. In this stage, in this stage, the cycle of pediplanation operates simultaneously with simultaneously with upliftment simultaneously with upliftment of the pediplane, which leads to rapid downward cutting, which leads to rapid downward cutting by reverse, rapid downward cutting by reverse. The pediments, the pediments become wider because of the reduction, because of the reduction of upland areas, because of the reduction of upland areas due to due to scarp retreat, due to scarp retreat. स्कारप रिट्रीट समझ रहे हैं ना, उसका क्या हो रहा है, इरोजन होता जा रहा है, ठीक है ना, एंगल सेम है पर इरोजन होता जा रहा है, ठीक है। अब बड़ा सा था, समझो बहुत बड़ा था, बहुत समय के बाद छोटा रह गया, तो अपलैंड एरिया जो है उसका रिडक्शन हो रहा है एंड पेडिमेंट का एरिया का एक्सपांशन हो रहा है ना। नेक्स्ट, मैच्योर स्टेज, मैच्योर स्टेज in the mature stage, erosion causes reduction, erosion causes reduction, erosion causes reduction in the number of Inselbergs, in the number of Inselbergs and and consistent widening of pediment, consistent widening of pediment of adjoining valleys with adjoining valleys which would eventually which would eventually coalesce, merge, coalesce, COLSC, क्या मैंने बोला, अरे यार इतना बोलने से अच्छा मैं लिख ही देता हूँ। यही है ना, नहीं नहीं नहीं, अभी ठीक है। कभी कभी आई डोंट नो, मेरा भी दिमाग में फॉग हो जाता है।
ठीक है, पहले वाला ही ठीक था. Okay, so eventually coalesce, then old. Old stays. In the old stays, very few residual hills or inselbergs, very few residual hill or inselbergs are found, and is dominated by gently sloping gently sloping pediment gently sloping pediment. Finally finally evolving into single large single large single large landform of gentle slope single large landform of gentle slope called pedyplane called pedyplane. किसमें, किसके एग्जाम्पल में? होल स्टेज. देखो, अब ऐसा समझना है उसमें कि अरावली obviously, I mean, very difficult to correlate with अरावली माउंटेन एज अ होल. पूरा माउंटेन को तो कोरिलेट नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन maybe at some isolated, some localized, some localized regions of scarp can be seen ना. ठीक है, लेकिन उसके साथ भी हमको याद रखना है कि अरावली is I would say that is ill famous for mining activities. मतलब it is not because of the natural process. The scarp face is not developed because of the natural process. These scholars are not taking into account any role of the human beings, ना, any role of human being as a modifier of the slope. ठीक है, तो when we try to give example which is I said which is relatable to any of the model, it has to be completely, I would say, a completely preserved landform, right, where human interference has not been introduced. ठीक है, तो इसलिए अरावली का थोड़ा एग्जाम्पल लेने के लिए आई वुड से नो, मत लो एग्जाम्पल. ठीक है, क्योंकि जहाँ पे डीप माइनिंग हो रहा है, कटिंग हो रहा है, एंड रिसेंट रूलिंग सुप्रीम कोर्ट का पूरा पता है, हाउ गवर्नमेंट डिनोटिफाइड दैट एरिया ऑफ 100 मीटर्स ऑफ हाइट. वहां तक कोई भी माइनिंग कर सकता है 100 मीटर तक अगर हाइट है तो. ठीक है, तो बहुत सारा उसके बाद स्टे लगा देते हैं कोर्ट, है ना. तो इसलिए मैं मना करूंगा कि वो वाला मत एग्जाम्पल दीजिएगा. ठीक है, आई हैव सीन अरावली बट not I would say not as much higher elevation landforms. ठीक है, मैंने ऊपर से भी देखा है, जहाज से भी देखा है, लेकिन अरावलीज I would say they are more like they have more like hammock shape, hammock के जैसा ओवल टॉप ना, ओवल टॉप. ठीक है, तो ओवल टॉप में क्या होगा कि you'll have convex slope, but
वेर इज दैट? स्कार्फ फेस। स्कार्फ फेस नहीं है तो obviously that won't be, that won't be applicable in the case of LC King. But Penck has not talked about the scar face. So in that case, the example may fit into the Penck's one, but not in the case of LC King. LC King के लिए scar face जरूरी है. Sir, very big, very clean and rolling, सब plain तो सब rolling. क्या difference है? देखिए पेडी प्लेन क्या है कि द प्लेन विच इज एट द फुट हिल ऑफ द माउंटेन, मतलब दिस इज योर माउंटेन एंड यू हैव ए प्लेन एडजेसेंट टू द फुट हिल ऑफ द माउंटेन, सच प्लेन्स आर पेडी प्लेन. So very big, always picture high, Normal, yes, yes, 100%, बिल्कुल. And that has to do with the direction of the river water flow. What is the direction of the river water flow? Like when you see the Great Indian Plain, you'll find that the Great Indian Plain has more depth in Haryana, in Punjab, okay, in some part of Western UP. But as we go toward the eastern part of India, that means eastern, middle and eastern UP and West Bengal, Bihar, we find the depth of the sediment is decreasing. That's why you have the slope like this, ना. Slope ऐसा है, वो बताता है कि हाँ sediment का deposition ऐसा हुआ. The sediment depth is almost 8 to 9 किलोमीटर in हरियाणा. मतलब सोचो इतना डेप्थ है एल्यूमिनियम का, ठीक है. अब बात है कि जो फुटहिल रीजन है वहां पे हमको कैसा सेडिमेंट मिल रहा है, ठीक है. हमको किस तरह का मतलब वहां पे हमको जो सेडिमेंट मिल रहा है, क्या वो पेडिमेंट है? क्या उसको हम पेडिमेंट बोल सकते हैं? नहीं, हम पेडिमेंट नहीं बोल सकते. रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम स्कार्फ फेस नहीं है हमारे पास. हिमालय का स्कार्फ फेस नहीं है. हिमालय का कैसा है? स्टिप स्लोप बट नॉट हैविंग स्कार्फ फेस. तो एलसी किंग मॉडल नॉट एप्लीकेबल. डेविस मॉडल इज मोर एप्लीकेबल. व्हाई? बिकॉज दिस इज a humid belt. एलसी किंग एक तो ऑब्जर्वेशन एरिड रीजन में, हिमालयन रीजन कंप्लीटली ह्यूमिड ना, ड्रेन्ड बाय एंटीसीडेंट स्ट्रीम्स, ठीक है. तो प्रैक्टिकली बोला जाए, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि, मतलब आई एम नॉट हियर टू जज अबाउट एनी ऑफ द मॉडल. आई एम जस्ट सेइंग कि यू विल फाइंड डेविस मॉडल इज slightly more applicable, more visible. Na? You find such evidences, such landforms which are more closer to the Davisian concept. ठीक है. इसीलिए अब ऐसा समझना है, इसीलिए हम क्या देखते हैं, just at the foothill region of Himalaya we find what? We find one belt, we call it as, क्या बोलते हैं उसको? We call this belt as Bhabhar belt. Bhabhar belt is composed of what? Round shaped sediment. Those boulders, cobbles, pebbles. उस केस में फिर डाउट हो जाता है. When I see pediment, the pediment which has been given by L.C. King, that does not have boulder and cobbles, right? It has rocks. It has rocks of crystalline nature of varying size, but it does not have smooth surface of the rock. ठीक है. तो that explains very clearly that L.C. King is right when he says that, क्योंकि अगर मान लो रिवर अब चल कहाँ, रिवर तो अब स्कार्प के पास है ही नहीं ना, किसी जमाने में होगा ना, ठीक है. स्कार्प के पास रिवर इज फ्लोइंग वेयर? रिवर इज फ्लोइंग एट द बेस. रिवर इज फ्लोइंग हियर. रिवर इज फ्लोइंग हियर, है ना. अब जब भी बारिश होगा, सेमी एरिड रीजन में बारिश कब होगा आपको पता है? सेमी एरिड रीजन में बारिश तो इंटरमिटेंट होगा, सीजनल होगा, ठीक है, कभी कभी होगा. तो वट एवर वियर एंड टियर इज गोइंग टू हैपन, दैट इज मेनली द फिजिकल वेदरिंग, ठीक है. उसको ध्यान रखना है ना. तो उनका ये कहना है, और जैसे वेदरिंग होगा तुरंत, ठीक है. तो दिस इज वन थिंग यू ऑल हैव टू. स्लोप डेवलपमेंट के लिए तो मेरे ख्याल से अभी यू ऑल आर कंफर्टेबल. तो और एल्स यू डू वन थिंग, सभी लोग एक हेडिंग दे दीजिए ना, जस्ट गिव ए हेडिंग. अच्छा, उससे पहले क्या करते हैं, लेट मी शो यू, बिकॉज यू ऑल हैव दैट नोट्स, डायग्राम भी है, पर मैं चाहता हूं कि एक बार सब लोग यहाँ पे देख लें, है ना, कि क्या जो हमारा एलसी किंग का, ठीक है, एंड उसका भी पेंक का, एक बार सबका डायग्राम देख लीजिए आप लोग. बनाने को बना दूंगा यहाँ पे, लेकिन और टाइम कंज्यूमिंग होगा.
थोड़ी देर के लिए लाइट ऑफ कर देंगे ये, वहां पे स्विच होगा, पीपी लिखा होगा, देयर आर टू स्विचेस ना विथ पी मार्क देयर. पर ये देखना ना, हाँ, दिस वन यू कैन सी दिस वन. ठीक है, तो ये डेविस का मॉडल देख सकते हो आप. एलिवेशन ऑफ द हाईएस्ट डिवाइड
which is changing ना, ठीक है, सबसे ज्यादा कब है, यूथ स्टेज में, we have seen that ना. Then you can see this Pink's model, ठीक है, Pink's model में क्या हो रहा है, you have a changing, right, changing elevation of क्या, elevation of the right of the summit, or you can say the highest water divide, ठीक है. Then you see this, ये एलसी किंग का मॉडल ना, what we find, elevation of the highest divide is same right from the youth stage to the old stage, ठीक है. और देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये उनका देखिए पैरेलल रिट्रीट, ठीक है, पैरेलल रिट्रीट, और क्या हो रहा है यहाँ पे, यह वाइडनिंग ना, वाइडनिंग, ठीक है, एंड देन पैरेलल रिट्रीट इज टेकिंग प्लेस, कहाँ पे, इन द टॉप पार्ट एंड द मिडिल पार्ट, top part and the middle part, top part and the middle part, like this, and that is right, that is developing into ना, that is developing, मतलब coalescence of these pediment, ये है pediment, यहाँ पे है pediment, ये है pediment, ठीक है, ऐसे सारे pediment मिलेंगे बहुत सारे, because this is going on over the entire region ना, many of those pediments will coalesce and they will develop into one larger, right, larger gentle sloping land mass or gentle sloping landform that would be called as pediplain, ठीक है ना. तो डेविस का क्या हो गया, पेनी प्लेन, पेंग का क्या हो गया, एंड्रूम ना, एंड्रूम, ठीक है. देखो, अरे डेविस पेंग का है ना एंड्रूम हमारा, इनका क्या है, पेनी प्लेन, ठीक है, और इनका है पेडी प्लेन, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है. तो ये आपको मेनली दिखा रहा था. ओके, नाउ you better write about the slope, right, slope development for these three models, ठीक है. पहले आप उसके लिए थोड़ा सा लिख लीजिए. तो फर्स्ट यू राइट slope development, give the heading slope development, slope development, and then you write the slope development concept of Davis, slope development concept of Davis, slope development concept of Davis. His concept is called as slope decline concept or downwesting slope decline concept. स्लोप डिक्लाइन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, स्लोप डिक्लाइन कॉन्सेप्ट और डाउन वेस्टिंग. In Davis model, slope development takes place from top to bottom. Slope development takes place from top to bottom, where the steeper slope from above give way to gentler slope below. Full stop. There is progressive reduction of angle, of the slope from top
to bottom, from top to bottom, ठीक है? तो you can keep in mind this, ठीक है? This diagram, ठीक है? तो what is happening? You can see here, top to bottom, ना? Like this, downwesting, ठीक है? And see the slope. Slope को देखना है. See the angle of the slope here. See the angle, है ना? What is happening? See the angle. So as we go down, what we find, the angle of the slope is decreasing. ठीक है? Angle of the slope is decreasing. जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो एंगल स्लोप का क्या हो रहा है? जेंटलर होता जा रहा है. मतलब जस्ट थिंक ऑफ दिस ना. इतना अगर कॉम्प्लेक्स लगे तो ऐसे देखना है. अलग अलग कर लो. दिस इज योर लैंड फॉर्म एंड हियर इज योर एंड प्रोडक्ट. ना व्हाट इज द एंगल ऑफ द स्लोप? ठीक है, क्या एंगल बन रहा है? एंड सी द एंगल ऑफ दिस स्लोप. ठीक है, तो स्लोली progressively the angle is decreasing. ठीक है, angle is decreasing. How? From top to bottom. ठीक है, from top to bottom, है ना? That is right. That is your right. That is your I said that is your downwesting. ठीक है, clear? ठीक है, ये जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, जैसे जैसे टॉप से नीचे जाते जाएंगे, एंगल जो है स्लोप का कम होता जाएगा. ठीक है, that will start decreasing, है ना? अरे एंगल ये है, ये एंगल बना रहा है ना, ये एंगल बना रहा है, फिर ये स्लोप है, एंगल बना रहा है, फिर ये एंगल बना रहा है. ठीक है, तो हम जैसे जैसे नीचे आएंगे तो स्लोप का एंगल कम होता जा रहा है. ठीक है, इट इज बिकमिंग जेंटलर एंड जेंटलर, जेंटलर एंड जेंटलर. ठीक है, फाइन. सो नेक्स्ट इज योर पेंक. पेंक का तो दिस योर पिंक, पिंक कॉन्सेप्ट ऑफ बैकवर्स्टिंग. और एलसी किंग का तो आप लोगों ने बनाया, पैरेलल रिट्रीट का भी, है ना? तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि इन पिंक्स मॉडल व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज नो पैरेलल रिट्रीट. ठीक है, देयर इज नो पैरेलल रिट्रीट. द राइट the I would say the gentler slope from below will replace the steeper slope above. ठीक है, मतलब इनका जो कहना है वो क्या है? इनका कहना है बैकवेस्टिंग. बैकवेस्टिंग ना, डेविस क्या बोल रहा है? डाउन वेस्टिंग, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये क्या बोल रहा है? बॉटम टू टॉप ना, नीचे से ऊपर की तरफ. ठीक है, क्लियर? तो दिस इज राइट, दिस इज योर दिस इज योर पेंग्स, राइट, पेंग्स कॉन्सेप्ट. हाँ, तो आप लिख लो पेंग के लिए भी फटाफट. एलसी किंग का तो हमने लिखा हुआ है, तो जस्ट राइट अबाउट पेंग. पेंग कॉन्सेप्ट ऑफ slope development
Peng's concept of slope development is called slope replacement concept. Slope replacement concept under single inverted comma. Next point. Peng said that slope development takes place from bottom to top. Slope development takes place from bottom to top, where gentler slope from below, where gentler slope from below replaces, where gentler slope from below replaces steeper slope above. There is, after full stop, there is progressive reduction of slope angle, progressive reduction of slope angle from top to bottom. Sorry, from bottom to top. Sorry, make a correction quickly. From bottom to top, ठीक है, एंगल रिडक्शन हो रहा है. जैसे ये एंगल क्या हो रहा है? एंगल ऑफ दिस स्लोप, यू कैन सी हियर ना, एंगल ऑफ दिस स्लोप इट इज राइट, इट इज रिड्यूसिंग ना. हमें इसका एंगल देखिए कितना बना रहा है. जैसे हम इसका एंगल देखें, व्हाट इज द स्लोप एंगल, ये, देन यू सी दिस वन, देन लाइक दिस, ठीक है, देन दिस स्लोप, इसका एंगल देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या एंगल बना रहा है, यहाँ क्या एंगल बना रहा है, यहाँ क्या एंगल बना रहा है. लेंथ ऑफ द स्लोप ऑल्सो इज नॉट इक्वल इन केस ऑफ पेंक, ठीक है, वेदर इट इज योर अपर पार्ट और द मिडिल पार्ट, ठीक है, इनका लेंथ इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है ना. बात समझ में आ रहा है? लेंथ इक्वल नहीं रहेगा. एलसी किंग में क्या है? द लेंथ एज वेल एज द एंगल ऑफ द स्लोप इन बोथ अपर एंड मिडिल पार्ट विल रिमेन सेम, ठीक है. So now you know the slope development concept of Davis, Penck and L.C. King. ठीक है. तो if you get a question on slope development, ना, समझ में आ रहा है slope development, तो you should be able to answer it. ठीक है. By referring to these three models, ठीक है. क्या ये तीन मॉडल कहते हैं ना slope development का ऊपर में, ठीक है. And accordingly you can highlight their merit and demerit. ठीक है, बिकॉज दीज ऑल आर योर कैसा मॉडल है? दीज आर योर इंडक्टिव मॉडल्स. दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन डन इन ए पार्टिकुलर लोकेलिटी हैज बीन कंसिडर्ड टू हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन. ठीक है, इंडक्टिव मतलब छोटे से पूरा दुनिया को जनरलाइज कर देना, छोटा ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग ए जनरलाइजेशन फॉर द होल वर्ल्ड. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव अप्रोच. ठीक है. एंड डिडक्टिव क्या होता है? व्हेन यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल यूनिवर्स एंड यू हैव एक्सप्लेन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम. मतलब आपने क्या किया फ्रॉम जनरल कमिंग टू द स्पेसिफिक, जनरल कॉन्सेप्ट अप्लाइड टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस. ठीक है, दिस इज योर डिडक्टिव अप्रोच. यू विल स्टडी दैट in section B of paper 1, that is your perspective in human geography. So one major part of, I would say, major part of this geomorphology is over. Now we have to deal with some topics which are going to take us to the last or to the conclusion part of geomorphology. So we are going to start with one very, I would say, insignificant. Why insignificant? Because
you cannot expect any type of question from the topic. Okay, but the topic is important in the sense that you should have theoretical understanding of this, phenomena, or this particular um, right this particular topic. तो उसको हम क्या बोलते हैं? Denudation chronology. ठीक है, this is your one small topic here ना, denudation chronology. ठीक है, तो what you have to keep in mind here, क्या क्या आपको ध्यान रखना है? First thing, what is denudation chronology? Second, why we study denudation chronology. Third, objective of studying denudation chronology. Fourth, approach of study. Fifth, limitations. ठीक है, तो इसको जो नोट्स में है बस उतना ही आपको पढ़ना है. एक पेज का नोट्स है, जस्ट वन पेज बैक टू बैक. ठीक है, तो denudation we all know, weathering and erosion, right? Transportation, deposition, that is your denudation. It has 4 stages. Okay, right? Now denudation chronology, chronology simply means the study of what? The study of the denudational processes, denudational activity in any particular region, to understand the geological history of that region. Okay, what has really happened to this particular region or this particular place, that can be understood by studying the landform themselves, right? By studying those landforms and trying to reconstruct the denudational history of the area. Okay, by studying the chronology, we'll be able to reconstruct the denudational chronology, the denudational history of that particular region. Okay, this is what we call as denudational chronology. Okay, because we know that the earth's surface is highly dynamic. We know that earth's surface has never ever remained stationary. We know that we had regular interval of formation of supercontinents. Yes, those supercontinents were formed near polar areas. Again they broke and divided into sub blocks to further acquire present day distribution. Okay, which means that those land area, they pass through different climatic zones, different climatic conditions in different periods of time, and different climatic zones will obviously give rise to different agents of denudation. Yes or no? ठीक है, जैसे कि मैंने जब वैगनर का पूरा कहानी, ये वैगनर ने तो यही काम किया ना. क्या पढ़ा है उन्होंने पढ़ा सबसे बड़ा उनका एविडेंस था ग्लेशियल मोराइन्स ना, ग्लेशियल डिपॉजिट उनको मिला बहुत जगह में. ठीक है, and he was convinced that the earth's surface is not, the continents are not stationary, they are drifting all the time. Yes, ठीक है, तो denudational chronology helps us in understanding the existence of different climatic condition, or you can say that helps in studying the paleoclimatic condition of that particular area. What was the change in climatic condition observed over that particular place or particular region, that can also be known, because we know that a particular type of agent follows a particular type of process to erode, denude any particular landform, and ultimately that gives us indication of existence of that agent
at some point of time in geological history. ठीक है ना? तो denudation chronology has some important I would say it has some important application, right? We study denudation chronology because we want to know the landforms in a better way. ठीक है? And one more thing we should keep in mind, that the most common, I said, the most common agent, the most dominant agent over the land area is running water. ठीक है? Now running water covers 60% of the land area. They cover 60% of the land area. Now just imagine those 60% of land area which are now having network of river stream, those areas, if they are digged deeper, if they are investigated into the lower layer of sediment, we find what? We find that these areas which are now being represented, or which are now experiencing humid condition, in past, those areas used to have a different climatic condition. They used to have different agent of denudation operating here. Okay, how we are able to find that? कैसे पता चलता है? By studying the sediment which are lying at different depth of the valley, or the sediment which are lying at different depth in a lake. ठीक है ना? लेक में हम क्या सेडिमेंट देखते हैं? हम देख रहे हैं सबसे नीचे क्या है ना, सबसे नीचे क्या देख रहे हैं कि you have a layer of, I said, you have a layer of clay material. Okay, which means that at some point of time this particular place was having glaciers, right? Then we find boulder, cable, one layer of boulder, pebbles, cobbles, and that again confirms that after glaciation was over, we had melting of the glacier, and that led to enumeration, that led to the origin of network of river stream, because river stream carry boulder and cobbles with them, and they were deposited. Yes. Now after the earth entered into the warmer phase, the lake has dried up. Okay, the lake has dried up, and now the region has evolved into a dry region, devoid of vegetation, devoid of human settlement, and wind becoming the dominant agent. And on the top part of the landform, what we find that you have a thin layer of lowest deposit. Lowest deposit is one deposit which is associated with wind, not with the glacier, not with the running water. But now this area is having what? Lowest deposit. ठीक है? मतलब आज हवा है, इसका मतलब किसी जमाना, like you must have studied about the northwestern part of India, which used to be, which used to support the oldest civilization of the country, oldest civilization of this Indian subcontinent, that is your Harappan civilization. There were many thriving settlements on the I would say on the northwestern part, in the northwestern part of the country, in Rajasthan, Haryana, ठीक है? और आज वहां पे कुछ नहीं. We don't have settlements there. Why? Tell me. क्यों? क्योंकि हमको मालूम है. One of the theories says that the river Ghaggar dried up because the Yamuna changed its course due to tectonic movement. Yamuna used to be the tributary of Saraswati river, right? And Yamuna is a perennial river. ठीक है? So that used to feed Saraswati, and Saraswati, which you now know as Ghaggar, used to drain the entire Rajasthan region. ठीक है? But with the tectonic, I mean, or I would say with the change in the bedding plane of Yamuna, what happened? Yamuna got separated from Saraswati and started moving eastward, finally joined Ganga. ठीक है ना? तो एविडेंस हमको ये बताते हैं कि हाँ, टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, ग्रेजुअली हुआ होगा. Nobody saw it properly, nobody knows, nobody can document that, but yes, this is one of the plausible explanation we have. ठीक है?
तो जो आज ड्राई है वो कल ड्राई नहीं रहेगा, ठीक है। कल जो वेट है वो परसों फिर से ड्राई हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको, तो हम डेन्यूडेशन क्रोलॉजी से हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पे किस टाइम पे क्या हुआ हो। मतलब the first thing it can help us is to know the geological history of the region. Second, it can help us to understand paleoclimatic history of the region. And third, that can also help us in knowing the paleobotany of the region. मतलब knowing the vegetation, the past vegetation, ठीक है, clear? Yes. Now, ये तो सब हम लोग बात करें डेन्यूडेशन क्रोलॉजी, हम ये सब पता करने के लिए ना। लेकिन हम लोग एक चीज जो भूल जाते हैं वो क्या है कि जैसे जियोलॉजिकल सिस्टम में हम उसको पता कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वी कैन फर्दर क्लासिफाई दैट, एंड वी कैन टॉक अबाउट द रोल ऑफ टेक्टोनिक प्रोसेसेस in giving rise to a specific geological structure, ठीक है। And second is what? ठीक है। तो these are your uh, I would say objectives we have of denudational chronology. तो knowing geological history, paleoclimatic history, ठीक है, how a region has been subjected to repeated change in climatic condition. So under geological history, obviously the role of tectonic processes, knowing volcanism, right? Knowing volcanism, knowing crustal से crustal fracturing, age and nature of the rocks, that also can be ascertained by how? By radio dating, है ना? Radiometric dating helps us in finding out the age of the rock. And then paleobotany of the region, that is your vegetation, that can be done by carbon dating, है ना? Where the age of the fossil can also be ascertained, ठीक है। So these are the objectives, these are the application of denudational chronology. Now this study is based on some accepted principles, some accepted approach. What are they? क्या क्या है? पहला, the first one, that is your principle of uniformitarianism, मतलब कि the process which is operating today, they must have operated yesterday also, ठीक है। Second is your concept of the cyclic nature of the earth, cyclic nature of the earth. That means the climatic conditions change over different parts of the earth, in a cyclic manner, ठीक है। Sometime you have ice age, sometime you have warmer conditions, sometime you have glaciation, sometime you have warm condition or hot condition, ठीक है।
साइक्लिक नेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है, क्लियर. Then you have the division cycle of landform evolution, that is also considered as right one of the approach to right to study, ठीक है. उससे भी हम मतलब सोच लो, इसी से आपको डेविस का अंदाजा लग जाएगा कि कितना वो क्यों इतना पॉपुलर है, ठीक है, और क्यों उनका मॉडल इतना इजिली एक्सेप्टेबल है ना. एंड देन वन इज कॉल्ड एज पैलिम्सेस्ट टोपोग्राफी. उसका मतलब ये होता है कि when you try to study the behavior of the landform in geological time by studying the existence of the old profile as well as the new profile, ठीक है. पैलिम्सेस्ट वेरी कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी, मतलब जिसमें क्या हुआ है, the history of the history of the landform has been written by exogenetic processes, and that was preserved. Okay, after some time the exogenetic processes erased that history, matlab the landform was denuded. Okay, again endogenetic forces rewrote the history, a new development, a new landform was formed. Again that has been washed away, that has been denuded, ठीक है. तो palimpsest topography developed when earth when geomorphic processes, that means endogenetic and exogenetic, they क्या करते हैं, they write, erase and rewrite, ठीक है. write, erase and rewrite the मतलब क्या, the geological script of the landform, ठीक है ना. मतलब क्या कहने का मतलब हुआ कि लैंडफॉर्म बना, डेन्यूड हो गया, इरेज ना, फिर बना, फिर से इरेज हो गया, फिर से एक बार बना, ठीक है. तो वो एक टोपोग्राफी बन जाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी दैट इज कॉल्ड एज पैलिम्सेस्ट टोपोग्राफी, ठीक है. तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट ना. देखो, सीक्वेंशियल चेंज इन लैंडफॉर्म थ्रू टाइम, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म, साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री, पैलिम्सेस्ट टोपोग्राफी, डेविसन मॉडल ऑफ साइक्लिक इवोल्यूशन ऑफ लैंड ना, ठीक है. तो दीज आर द अप्रोच वी फॉलो, ठीक है. लेकिन ये सारा जो अप्रोच है, यू नो, दैट हैज इट्स ओन लिमिटेशन, ठीक है. इसका खुद का लिमिटेशन है. वी कैनॉट क्या बोला जाए, will not be able to, or we cannot match all the dots of geological footprints over any landform, because the landform is very complex, very complex. It is not easy. That means these methods can directly help us in reconstructing the geological history for some time, maybe for 300-400 million years, but they won't be able to tell us about the entire history of the earth, ठीक है. The age of the earth is 4.6 billion years, but what we know, क्या हम लोग जानते हैं, ठीक है. We have been able to date the oldest rock over the land, that is 4.1 billion years old only, right. Then what happened to those 500 million years of initial time or initial period of earth evolution? We don't know, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं. Are you getting my point? That was there, but that has been buried, that has been destroyed, that has been lost forever. Now, earth has not preserved that. Earth has not preserved the evidence. एविडेंस नहीं है, एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया. जैसे हम लोग का इंडियन मूवी में, बॉलीवुड मूवी नहीं होता है, ठीक है, कि आप जैसे कोई विलन है, उसके लिए आप एविडेंस इकट्ठा किया और कोर्ट में जा रहा है, या अभी एविडेंस में मतलब एविडेंस सबमिट करने का स्टेज आ रहा है कोर्ट में, ट्रायल शुरू, उसी समय पता चला ऑफिस में आग लग गया. हाँ, बहुत कॉमन है, इंडियन बॉलीवुड मूवीज के जैसा होता है. देखा, आप सुनते रहोगे कि सेक्रेटरीट के आज जो है जनरल एस्टेब्लिशमेंट में आग लगी. क्यों आग लगी पता नहीं, ठीक है. और ऐसा नहीं कि यहाँ लगता है, सब जगह, दिल्ली में सबसे ज्यादा लगता है, पता भी नहीं चलता है, और बहुत आसान काम है. तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कहता है, डिजिटाइजेशन करना शुरू कर दिया, ठीक है. लगा लो आग, कोई बात नहीं, कागज को आग लगाओगे ना. हाँ, अब इतना बड़ा खेल होने वाला है, तो पता चला तो सर्वर ही उड़ाना पड़ेगा, ठीक है, पूरा सर्वर रूम को ही उड़ाना पड़ेगा ना. तो और अभी तो मालूम है कि हम ना, लेयर्स ऑफ बैकअप ना,
कितना सारा बैकअप है, तो एक चला जाए तो दूसरा भी पकड़ में आ जाएगा ना। तो दोज केसेस यूज्ड टू बी, तो जस्ट लाइक दिस ना, कि वो हुआ होगा लेकिन अभी हमारे पास एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो इट हैज इट्स ओन लिमिटेशन, व्हाई? बिकॉज डायरेक्ट स्टडी वोंट बी एबल टू गिव अस मच, राइट, मच नॉलेज, मच इंफॉर्मेशन अबाउट, राइट, अबाउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो ये है मेनली डेन्यूडेशनल क्रोनोलॉजी का मेन बात, ठीक है, कि व्हाट इज द रीजन, राइट, व्हाट इज द रीजन और व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग, राइट, स्टडिंग डेन्यूडेशनल क्रोनोलॉजी। तो कल हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले, टुमारो विल टेक अप द फर्स्ट टॉपिक दैट वुड बी चैनल मॉर्फोलॉजी, ओके, चैनल मॉर्फोलॉजी। आफ्टर दैट विल टेक अप द इरोजनल सर्फेसेस, ठीक है। ये दो टॉपिक को पढ़ना, थोड़ा सुनने में और पढ़ने में भी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगेगा, लेकिन बहुत कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, थोड़ा फिजिक्स और थोड़ा सा ज्योमेट्री का खेल है ना। तो वो हम लोग कल थोड़ा सा देख लेंगे उसको, ठीक है। एंड देन I'll be giving a note on this. I'm preparing that note on a topic which is there in the syllabus, not there in the notes. That is your economic geology and environment. ठीक है, तो उसके ऊपर एक नोट दे दूंगा रेडीमेड, बस इतना ही उसमें रेडीमेड रहेगा। यूपीएससी में आज तक एक क्वेश्चन पूछा गया 10 मार्क्स का ना, द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी, ठीक है, 10 मार्क्स, ओके, 2023, ओके। तो बस उसी पैटर्न पे कुछ आपको बना के दूंगा इन केस ना, व्हाट इज इकोनॉमिक जियोलॉजी, इट्स स्कोप ना, एंड राइट, एंड इम्पैक्ट अपॉन द एनवायरमेंट, मिटिगेशन मेजर्स, ये सब पे बात करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द 4 एरियाज ऑफ दैट टॉपिक। तो आई विल बी गिविंग अ सेपरेट नोट ऑन दैट, डोंट वरी। फाइन, सो विल मीट टुमारो एंड याद रखिए कल, कल हो गया, टुमारो इज वेडनेसडे ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो वेडनेसडे, टुमारो विल हैव ए प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। फिर से टॉपिक मैं बता देता हूं इस बार, टॉपिक डेविस पेंग एलसी किंग, ठीक है, स्लोप डेवलपमेंट, ठीक है, एंड एंड द थ्योरीज ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है। थोड़ा पीछे का भी तो याद रहना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि इतना जल्दी जल्दी वाला, ताजा ताजा वाला याद है, पीछे वाला सब भूल गए, वो तो नहीं चलेगा, ठीक है। 2 टॉपिक्स एंड एक और टॉपिक जोड़ देता हूँ, ठीक है, एक और टॉपिक जोड़ देता हूँ कल के लिए। नहीं, कल नहीं देना टेस्ट, आज ही आप आए हैं और फिर कल टेस्ट नहीं दीजिएगा तो आप कल भी नहीं आएंगे, हमको पता है ना। क्या कल नहीं, मतलब बिजी, आर यू बिजी टुमारो? नो, इफ यू वांट आई कैन पोस्टपोन इट टू थर्सडे, परसों कर देंगे, इतना कर सकते हैं, मतलब बट प्रोवाइडेड यू टेक ए प्लेस दैट यू वुड बी कमिंग ऑन थर्सडे, क्योंकि आपको तो बहुत रेयरली आते हो ना क्लास आप, तो इसलिए थर्सडे, थर्सडे, ठीक है। थर्सडे विल हैव 3 क्वेश्चंस, 20 मार्क, 15 मार्क एंड 10 मार्क, ठीक है, क्लियर। एक और टॉपिक है जो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 टॉपिक तो मैंने बता दिया ना, तीसरा टॉपिक वुड बी योर थर्ड टॉपिक will include your evolution of continents and oceans, ठीक है। वहां से कहीं से भी कुछ भी पूछेंगे, आपको मेजर एरियाज बता दिए, तो जस्ट यू हैव 1 डे, you may revise if you want, okay, so we'll meet tomorrow.